सब लोग मेरे को बोल रहे हैं। तो आप इसके अलावा और किस बात में आपकी क्या स्पेशलिटी है? एक्चुअली हॉबी अगर आप पूछो तो फिटनेस एंड कुकिंग, these are the two things which I like to do besides parenting the children. So besides that, nothing much. So that keeps me busy. I don't think I have any more time to do anything else besides all these things. Oh, thank you so much. Thank you. Thanks for all the organizers, Soumya, Rajesh Manuja, Shankar, for doing all a great job. Pitamari, Bharti, I think they have done a wonderful job by bringing us all together. It takes me back to my school. You know, I was a very, very naughty child, very, very mischievous when I was in school. A very, very average student when I go back to my school days. I think they were the best moments in my life when I think back. No tensions, nothing, and you know, you're just all the time with fun, playing, not too much pressure. What I see today in today's children, they do a lot more than what we were doing when we were as children. So I think they have more to do. I mean, seeing them, I somehow feel that if I would have been born at this era now, I wouldn't have enjoyed so much as what I have done. So I think I am quite fortunate that I was part of the 1985 batch. So thank you so much. Friends, before I start off with something, I would like to express my heartfelt thanks to all the committee members. Before I start off with something, I would like to express my heartfelt thanks to all the committee members for taking this initiative and putting on their strenuous efforts for making this event a great success. And I'm equally grateful to all of you for your cooperation, because no matter how much effort we could have put, it couldn't have been possible without your cooperation. Because I believe that success is a cooperative effort. And a special thanks to Mr. Vijay Patil and Geeta Gopal for having me this opportunity to meet once again after 3 decades to some of the most wonderful people on this planet. One thing is because only Vijay Patil had my contact number and he knew that I'm still alive. And it was Geeta Gopal's noble intention to bring more and more people from C Division to share some of the best moments of their life. Friends, I request all of you kindly to give a big round of applause for each member of this family for contributing in their own special way to make this event a grand success, a memorable one, and a great one. Big round of applause. The reason I'm telling this is I have this opportunity to be some of the most beautiful people on this university, because today is 10th October. And 10 is a lucky number. And being a sports person, I remember that 10th October is always ruled by the best player of the team. And I firmly believe and declare that I am talking to a group of people who are the bigger players of life. They are the bigger players of occasion. And I consider myself privileged to be with the people who have already accomplished a whole lot more and done some great things in their life, and I wish them most and more in the future. I consider myself very proud to be a part of this program, a part of this family, a part of this team. It gives me immense pleasure to welcome all of you. Thanks for coming in big numbers and contributing and showering your love, your affection, your consideration and your generosity in a great way. Thank you so much. मैं बड़ी देर से मेरी बारी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने ये देखा कि औरतों के हाथ में 2 चीज़ अगर आ जाए तो फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक है सेलफोन और दूसरा माइक। क्योंकि उनके हाथ में अगर सेलफोन आ जाए तो वो उंगलियों से बात करती हैं, और उनके हाथ में अगर माइक हो जाए तो फिर वो मुंह से बात करती हैं। और गालिबन मुझे वो डायलॉग याद आ गया डर्टी फिल्म का
डर्टी फिल्म आप लोगों में से कितने, डर्टी पिक्चर आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है? मर्दों ने तो शायद सभी लोग देखे हुए फिल्म थी वो, लेकिन उसमें विद्या वाला ने डायलॉग बोला था तो मुझे याद आ गया कि इतिहास के पन्ने पर तो देखो, मर्दों का जमाना रहा है, औरतों ने आके कयामत कर दी है, और सही में हर फील्ड में औरतों ने आके कयामत कर दी है। लेकिन मैं मर्दों की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की लड़ाई वही लड़ जाता है जिसे अपने आप से लड़ना आता है, और हम ये मर्द हैं, हमें आप लोगों से निपटना आता है। तो यहाँ पर ऐसे कितने मर्द हैं जो मेरा साथ निभाने वाले ना, तो से बढ़ने के लिए हाथ पकड़ रहे हो, मर्द ही आए ना भैया, डीजल है, ठीक है। फ्रेंड्स, I'm going to announce some of these that have in the hand. The names that I announce at the end come up, have some fun with me, and let's have some good time along with our family members. First name that I would announce is Mr. Sudarshan Shetty. गुरुओं के रंग भरे बादलों बाहर चले भी आओ कि इस महफिल का कारोबार चलेगा। मिस्टर अनिल लखानी, अनिल लखानी, मिस्टर अजय शेट्टी, मिस्टर अजय शेट्टी, मिस्टर गुलाब निहारी, घड़ी गया, वेंकी, मिस्टर वेंकी, मिस्टर ललित शर्मा, मिस्टर संदीप भावस्कर, मिस्टर आर मोहन राजू, मिस्टर आर मोहन राजू, और मिस्टर राजू जी, मिस्टर हेमंत, मिस्टर हेमंत, हेलो, विजय बहादुर, ये सब मर्द है। हाँ, ओके। मिस्टर प्रदीप रोहिरा, मिस्टर सुनील हरचंदानी जगतानी, कितना, मिस्टर रवि कोमचा, कुछ कहने से पहले मैं सब एक संदीप भावस्कर का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे उनके बच्चियों को कुछ अच्छी एक्टिंग करते हुए देखा था। मिस्टर किरण भोगावकर, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ मैं कि आपकी बच्चियों को मैंने DD नेशनल चैनल पर सह्याद्री पे देखा था। आई वेरी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर रेजिंग योर डॉटर्स इन अ वेरी वेरी स्पेशल वे। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि जब से रखा है मेरे आंगन में मेरी बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में मेरी बेटी ने कदम, फिर इस बरकत ने मेरे घर में फाका नहीं होने दिया। Friends, I am so proud of Mr. Sandeep Bhawaskar, Kiran Bhogavar, and all my friends who have been raising their daughters in a very positive environment, and they have been encouraging the daughters to operate out of a larger vision for themselves and giving them a curriculum that gives them
special sense of purpose, a sense of direction, a sense of meaning, and teach them to how to operate on a higher level. And I'm so proud of them. My blessings are always with all of us. Thank you so much. Friends, यहाँ पर हमें एक गेम खेलना है. इस गेम में अगर मैं आपको टेनिस कहूँ तो आपको क्रिकेट की एक्टिंग करेंगे. When I say tennis, then you have an eye as if you are playing cricket. Or when I say that cricket, then you act as if you are serving a tennis ball. Okay? तो उस खेल में जब आपकी एक्शन ऑपोजिट की बजाय अगर हो जाएगी तो फिर आप आउट हो जाएंगे. That's only game you have to play. Okay? तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस गेम से.